Hello. हेलो, मेरी आवाज आ रही है अब? हेलो, कैन यू हियर मी? कोई बोलो। यस सर। एक्चुअली लास्ट टाइम तुमने कुछ सुना कि अचानक से बंद हो गया था, मेरा अचानक से रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था, कुछ मतलब हैंग हो गया था पूरा सिस्टम। उसमें तुमने कुछ पूरा मिस हुआ? सर थोड़ा सर पहले सुना, उसके बाद वो म्यूट हुआ फिर से। पता नहीं इसको क्या हो गया अचानक। अब मैंने बजाय यूनिवर्सिटी के वाईफाई के अपना ही हॉटस्पॉट चला दिया, देखते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम चलो मैं वहीं से करता हूँ। सो हम शेयर करते हैं स्क्रीन को। पर से इसमें भी वो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उतनी नहीं है लेकिन इट्स मोर ऑफ ए कैलकुलेशन काइंड ऑफ थिंग। तो मेरे कहने का मतलब था, जो हमने स्टेटमेंट किया था क्यूपर्स थ्योरम का, ऐसा कभी नहीं हुआ था जो अभी हुआ। बिल्कुल कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था सिस्टम, न कीबोर्ड, मतलब बिल्कुल। क्यूपर्स थ्योरम, which can be thought of as a generalization of Gauss-Lucas theorem. Sort of an Cooper's theorem वो था कि if every half plane, let me write it again, थोड़ा जल्दी से मैं लिखता हूँ, जिसको हम स्क्रिप्ट h से लिखेंगे, which is all complex numbers c such that real part of e raised to power iota alpha into z is less than equal to some b, where b is some real number. Of course, alpha can be anywhere between 0 to 2 pi, and b is any real number that contains all the zeros of a polynomial f, that contains all the zeros of a polynomial f also contains the zeros of the polynomial f of z plus h, f of z minus lambda h, where of course lambda lies in the interval, it's a real number, that lies in the closed interval 0, 1, and gamma and h are complex numbers with the condition that if I rotate this by alpha h, it lies on the positive x-axis, and it's a positive real number, such that my hand is picture. Okay, now let us do the proof. So as usual, let z1, z2 up to zn be all the zeros of the polynomial f of z. Then we can write f of z as some c times summation k runs from 1 to n. जैसा कि हमने जैसा usual है हमारा, we just factorize it, which we can do by division algorithm if we know the zeros. And you have to think कि मतलब तुम्हें सोचना है ये कि what would be f of z plus h? What would be f of z plus h? It would be c times product z plus h minus zk, k runs from 1 to n. इसी तरह से what would be f of z minus lambda h? It would be nothing but c of z minus lambda h, right? Minus zk, k runs from 1 to n. मतलब ये you have to remember, मतलब हम क्या कर रहे हैं। जैसा कि हमने वो एक्सटेंशन ऑफ जेनसेन्स थ्योरम दिखाएंगे, हम दिखाएंगे इसका हर फैक्टर इन मॉडुलस इसके हर फैक्टर से बड़ा है।
सो इसका मतलब है इकट्ठे वैनिश, मतलब इनकी डिफरेंस जो होगी वो 0 नहीं होगी इफ z डज नॉट बिलोंग टू h, यानी इनके जीरोस इसके जीरोस तभी हो सकते हैं मतलब वो वही हो सकते हैं इन दिस हाफ प्लेन. सो दैट इज द हाउ वी क्या बोलते हैं प्रूव द थिंग. इंट्रोड्यूस मतलब वी लेट, जो ऐसे लिखते हैं, phi be the mapping from says C to C. We define a mapping such that phi of z is equal to e raised to power iota alpha into z minus b, and define u to be, this is definition, ये भी definition नहीं है actually. So u को हम मानते हैं real part of phi of z. Of course v को मानेंगे हम imaginary part of phi of z. u sub k को मानेंगे हम real part of phi of z k, and v को मानेंगे हम v sub k को imaginary part of phi of z k. Okay. Now by our assumption f के सारे के series z k's belong to h, right, which implies that the real part of a e raised to power iota alpha zk, right, is less than equal to b, which implies that real part of e raised power iota alpha zk minus b is less than equal to 0, right? And if you can see, it is the same thing as the real part of e raised power iota alpha, क्योंकि b जो है वो real number है, उसका real part वो खुद है, this is less than equal to 0. But what does that mean? So it implies that, अब मैं यही लिखूंगा क्योंकि next page पे miss हो जाएगा ये. It means that real part of phi of zk, जो इसकी function है, उसका जो real part है वो less than equal to 0 है, which is the same thing as uk, यानी uk सारे के सारे non positive होंगे. So therefore मतलब that is by definition, so मैं फिर से लिखता हूँ, जिस तरह से हमने define किया था, uk is less than equal to 0 for all k greater than equal to 1 to q, क्योंकि वो इस प्लेन में लाई करते हैं, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं. ओके, तो पहला तो ये है, all uk's are positive. Now if z does not belong to h, मतलब it lies outside this half plane, and h star को अगर मैं डिफाइन करूं e raised power iota alpha into h, which by my assumption is positive, है ना, I assume that ये जो e raised power, इसका नाम मैंने h star रख दिया, मतलब just to make my बार बार रिपीट न करना पड़े. तो ये तो पॉजिटिव है, एंड मैं कह रहा हूं अगर ये सब है, अगर ऐसा है, we claim that modulus of u minus uk plus h star, ये जो यहाँ पे है, is strictly bigger than modulus of u minus uk minus lambda o times h star. Of course, for all k runs from, of course, u positive. अगर u positive है और ये सब है, तो then for all k runs from 1 to up to n. So that's my claim. So let's prove the claim. Now this would be true. Now let's call this 1. Now 1 will be true. कब ये true होगा? You have to remember these are real numbers. है ना? This is real part of e of z. This is real part of e of zk, and
ऑफ कोर्स ये तो है ही रियल नंबर एच स्टार, बाय डेफिनेशन लैम्डा भी रियल नंबर है, दे आर ऑल रियल नंबर्स. नाउ दिस वुड बी ट्रू if दिस वुड बी ट्रू अगर इनका स्क्वायर ट्रू है. मॉडुलस अगर बड़ा है तो स्क्वायर्स भी वो फॉलो करेंगे. मतलब दैट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग. यानी यू शुड हैव u minus uk plus h star का स्क्वायर जो हम दिखाना चाह, अगर हमने ये दिखा दिया तो so let me write it as u minus uk minus lambda times h of star. अगर ये है तो वो ट्रू होगा, राइट. दैट इज इफ, अगर मैं इसको जरा लिखूं तो हमें क्या मिलेगा, दैट इज इफ u minus uk का स्क्वायर प्लस h स्टार स्क्वायर प्लस twice h star into u minus uk is bigger than u minus uk का स्क्वायर, right, plus lambda square h star square minus twice h star into u minus uk. अगर ये inequality है तो it is the same as this inequality which would imply this inequality. So of course ये cancel हो जाएगा, right? Then I write it as, इसको मैं यहाँ लेता हूँ h star वालों को, you will get twice h star into मैं एक चीज भूल गया, वो क्या, यहाँ lambda भी होना चाहिए ना क्योंकि यहाँ lambda है. Okay, so it should be twice h star into u minus uk. इस टर्म को मैंने यहाँ पर लिया तो it should be multiplied by 1 plus lambda. Should be greater than, इसको यहाँ पे ले जाते हैं, it should be h star square into lambda square minus 1. And of course, which is the same thing as h star square into lambda minus 1 into lambda plus 1. और of course, क्योंकि lambda positive है, lambda plus 1 positive होगा, तो I can just cancel it. So that is, मतलब ये सच होगा तो ये तब सच होगा if of course 2h star into u minus uk is greater than h star square. h star को भी हम cancel कर सकते हैं because that's also positive. So let me do it in the same step. तो h star को यहाँ करते हैं खत्म, यहाँ एक ही बचेगा. So I can write it as if twice u minus uk star is greater than h star into lambda minus 1. That is if twice u minus uk, right, minus 1 minus lambda. lambda minus 1 था तो यहाँ क्या आना चाहिए, 1 minus lambda, yes. नहीं प्लस, क्योंकि मैंने 1 minus lambda कर दिया. into h star is positive. यानी अगर मैंने ये positive दिखा दिया तो इससे 1 प्रूव हो जाएगा. But that is positive. Why? But since क्या u के सारे के u है पॉजिटिव, u में ले रहा हूँ पॉजिटिव है, राइट, और u के जो है वो सारे के सारे नेगेटिव है, तो पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज पॉजिटिव. और ऑफ कोर्स लैम्डा जो है वो एट मोस्ट 1 है, दैट मींस दिस इज आल्सो पॉजिटिव, h स्टार इज पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होगा ही. नाउ व्हिच इज ट्रू, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ which is true because u is positive, uk is less than equal to 0, and h star is positive, and 1 minus lambda is greater than equal to 0 because lambda lies between 0 and 1. तो which is true, hence our claim. क्योंकि ये सब पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव है, which would imply अगर हम रिवर्स में जाएं तो उसका मतलब अगर ये स्क्वायर्स बड़े हैं तो इनका मॉडल्स भी बड़ा ही होगा, मतलब ये इनइक्वालिटी होल्ड करेगी. hence 1 is true. तो हमने ये सेटल कर दिया कि 1 is true. इसके बाद थोड़ा सा हम ये काम करेंगे. देखो, if I take phi of z plus h minus phi of zk, and you have to remember, right, कहाँ गया, what is u? u is this real part of phi of z, right? अब ये कब पॉजिटिव होगा, जब this thing is positive, है ना,
इसका रियल पार्ट पॉजिटिव है, और इसका रियल पार्ट कब पॉजिटिव होगा? जब z h को बिलोंग नहीं करेगा। तो जब मैं ये कह रहा हूं u is positive, why? यहाँ मैंने लिखा है ना z does not belong to h. If z does not belong to h, यहाँ लिखेंगे since z does not belong to h, मतलब इस वजह से u पॉजिटिव होगा, because z does not belong to h, otherwise u would have been negative. तो जो इसकी डेफिनेशन है रियल पार्ट ऑफ phi z। हाँ, तो ये करने के बाद अगर z इसको बिलोंग नहीं करता, then this inequality holds, one is true, and therefore मतलब ये, चलो मैं फिर से लिखता हूँ, therefore if z does not belong to h, h means my half plane, then ये ट्रू है। जो हमने क्या किया था, वो क्या था, वो z माइनस लिखना नहीं चाहिए था, मैं वापस एक पेज मैंने वेस्ट किया, चलो वापस ही जाते हैं। ओके, दिस इज ट्रू, और कीप दैट, वन इज ट्रू। It does not belong to h, क्या था अपना, काश मैं इसको कट पेस्ट कर पाता। It is z u minus uk plus h star, u minus uk plus h star would be strictly bigger than u minus uk minus lambda h star. U minus uk minus lambda h star, oh, of course for all k running from 1 to up to n. और ये जो uk है, they are phi of zk का real part। मेरा जो phi of z है, this is in this way u plus iota v, और मतलब इसका रियल पार्ट u है। इसी तरह से phi of zk would be something like u sub k plus iota v sub k। That is the जो initial definitions हमने दी थी phi z की और u की और uk की और vk की, whatever। Also now I've got phi of z plus h minus phi of zk बराबर होता है e raised to power, जो इसकी definition है, into z plus h minus b minus e raised to power iota alpha into zk minus b, something like this, which would be equal to e raised to power iota alpha is, चलो, into z plus h minus e raised to power iota alpha into zk. Why? Because bb would cancel out, so you would have, can take this out, e raised to power alpha into mod, और अंदर बचेगा z plus h minus zk, right? Of course ये 1 है, तो it would be z plus h minus zk. So that is, अब इसी को हम दूसरे तरीके से लिखेंगे, यानी हम ऐसा करेंगे, अब इसको z plus h minus zk जो है वो बराबर है, उसका मतलब phi of z plus, इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, अभी तुम देखोगे हम कैसे करेंगे। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा, लेट मी राइट इट, फिर से वही e raised power iota alpha into z plus h, राइट, माइनस phi of z के, ऐसे ही लिखते हैं। अभी हमने दिखाया ना इसके बराबर है, लेकिन इसको हम अब दूसरे तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, यानी मैं इसको लिखूंगा इस तरह से, e raised power iota alpha into z, then I write it plus e raised power iota alpha into h, that is my h star, I want to involve this h star now, minus phi of zk, right? Then I can write it as, actually अगर हम देखें, क्योंकि phi of zk है ये, I can write it as phi of z plus e raised power iota alpha into h minus phi of z। क्यों? क्योंकि ऑफ कोर्स यहां से जो माइनस बी होगा वो यहां से कैंसिल हो जाएगा, वी विल अगेन गेट द सेम थिंग, राइट? ओके, होगा कि नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा, और ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे इसकी जगह लिखना चाहूंगा h स्टार, क्योंकि h स्टार इसका नाम था, which is a positive number by my assumption. But then I can write it as u plus iota v plus h star minus, of course, u sub k plus iota v sub k. But that can be written as
u plus h star रियल पार्ट को अलग करेंगे माइनस what is this uk of course plus iota into v minus v sub k, right? Now look at this, हम जो अभी प्रूव कर चुके हैं ऊपर, जिसको मैंने 1 रखा है ना इससे पहले नाम ये वाला. Now look at this, ये जो इक्वेशन है, हाँ, I have got u plus h star. देखो ये मॉडुलस इससे बड़ा है, तो what does that mean? It is a sort of an inequality for real part of this. देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका जो रियल पार्ट है वो इसके ये जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां हमने लेमडा के साथ बिगर है, यानी अगर मैं सपोज तुम्हारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, यू हैव गॉट से z1 प्लस x1 प्लस iota y एंड x2 प्लस iota y, राइट? और साथ में ये भी है कि मॉड ऑफ x1 जो है वो बिगर देन है मॉड ऑफ x2. इट वुड इम्प्लाई, मतलब यू कैन इजीली चेक दैट मॉड ऑफ x1 plus iota y would be then bigger than mod of x2 plus iota y. मतलब जहां ना इमेजिनरी पार्ट सेम है, यानी इसका रियल पार्ट बाय फर्स्ट दिस शुड बी बिगर देन u minus uk minus lambda h star, of course imaginary part सेम रखा, v minus vk in mod, क्योंकि इसका रियल पार्ट का मॉड इसके रियल पार्ट से बड़ा है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी वो बरकरार रहेगा अगर हम इमेजिनरी पार्ट को सेम रखें, मतलब मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, अब ये करने के बाद हमारा काम हो गया. सो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नहीं मैं चाहूंगा यहाँ इसी को यहीं पे खत्म करें. दैट इज मैं कह रहा हूँ कि z प्लस h माइनस जेड के इज नाउ बिगर देन, ऑफ कोर्स मैं इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, लेट अस राइट डाउन. चलो u इज रियल पार्ट, v इज, तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं फिर से ना इकट्ठा करके, मैं इसको लिखूंगा u प्लस iota v, then I have minus lambda h star, of course then I have minus u minus iota v, no, uk sir, uk vk, I think यही आएगा, uk माइनस है, नहीं यहाँ प्लस आएगा, राइट? नाउ दिस इज परफेक्ट. नाउ दिस कैन बी रिटन एज, वापस हम जाएंगे, इसको मैं लिखूंगा, व्हाट वाज दैट, phi of z minus lambda h star minus phi of z की. इसको मैं लिख सकता हूं फिर, phi of z क्या है, it would be e raised to power iota alpha, right, into z minus b minus lambda, what is h, h is equal to e raised power iota alpha into h, then what is phi z, it is minus e raised to power iota alpha into zk minus b, लेकिन एक ब्रैकेट में है ऐसे. Now as you can see b and b cancels out and it would be e raised power iota alpha, अंदर बचेगा z minus lambda h minus zk, और चूंकि इसका मॉड 1 है, so this would be z minus lambda h minus zk. This is what हम कहां पहुंचना चाह रहे थे. So we have proved modulus of z plus h minus zk is bigger than z minus lambda h minus zk for all k running from 1 to n, and or for all z which does not belong to my h, मतलब which lies outside that half plane जिसमें सारे के सारे zeros of fz है. ओके, और मैंने तुम्हें कहा था what would be f of
z plus h, f of z plus h इसके बराबर होगा, it will be product. Of course c होगा, k runs from 1 to n, it would be of course z plus h minus zk, और f of z minus lambda h बराबर होगा c times summation k runs from 1 to n z minus lambda h minus h. तो एक्चुअली हमने दिखा दिया, अगर मैं इस पे, चूंकि इसका हर एक फैक्टर इससे बड़ा है, if z does not belong to h in modulus, तो इन मॉडुलस से एक दूसरे से बड़े होंगे. Hence I can say product of k runs from 1 to n mod of z plus h minus zk is bigger than z minus lambda h minus zk. Of course, product k runs from 1 to n, which implies that, p of f of z plus h in mod is bigger than f of z minus lambda h if z does not belong to my half plane, जहां पे सारे के सारे zeros f के. Now, as you know, p of z plus h minus gamma times p of z minus lambda h using the triangle inequality is bigger than equal to, sorry मैंने p लिखा फिर से, हमें ना polynomial को p से लिखने की आदत. It would be greater than equal to f of z plus h minus f of z minus lambda h, और चूंकि इसका मॉडुलस 1 है गामा का, आई एग्री, यस इसका मॉडुलस 1 है, सो ओके दिस इज इक्वल टू f of z plus h minus mod of gamma into f of z minus lambda h, of course in modulus. ओके ये तो 1 है, सो दिस इज पॉजिटिव बिकॉज ये हमेशा इससे बड़ा है if z does not belong to h, which implies that f of z plus h minus gamma times f of z minus lambda h, or if z doesn't belong to h, does not vanish outside h, which implies that all the zeros of this polynomial f of z plus h minus gamma times f of z minus lambda times h lie in the half plane h. ठीक है, आई थिंक इसके साथ ही हमारा पहला यूनिट खत्म होता है. सो हाँ आमिर तुम हो वहां पे? आमिर, उमर जो ना अटेंडेंस देख रहा है, हेलो, क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो कि ऐसे ही रखा है खुला मैं बोल रहा हूँ? एनीबॉडी लिसनिंग? यस सर. यस सर. अच्छा मुझे बता दो, वो आमिर या उमर है जो ना सीआर और डिप्टी No, सीआर sir. है तुम्हारा? कोई भी नहीं है? सर. हाँ नो सर. ओके. जैनब तुम क्या करोगी, तुम जैनब अगर है तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो. भी बोल रही थी ना, कौन बोल रहा था? जी सर. हाँ तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि मेरे पास, मैं फोन पे मत हूँ. सर जैनब भी नहीं, सर जैनब है. जैनब है, कोई एक ले लो ना, मैं किसी को रिस्पॉन्ड. ओके सर. तो इसका स्क्रीनशॉट लेके किसको भेजोगे? आमिर को, अटेंडेंस का. ओके सर. ठीक है ना?